Hello everyone, this is Bhumika Parekh from Real Public School and today's topic is chapter number 17 from your class 6 GK book and the name of the chapter is Control Wastage. This is a very important chapter from the point of view of environment. To maintain your environment, to keep your environment in a healthy state, it is very important that the wastage should be controlled. So we are going to see how can we control wastage in the chapter. We are concerned about saving our environment and about the future of the planet Earth. Most of us think about stopping pollution of our resources. We must also pay attention to not wasting the resources we have. ठीक है, जो भी हम क्या सोचते हैं हमेशा कि हम एक बेटर साफ सुथरा रखें सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको पोल्यूट नहीं करें, बट अलोंग विद दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू पे अटेंशन दैट यू आर नॉट वेस्टिंग द रिसोर्सेज यू हैव। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज आपके हैं उसको वेस्ट नहीं करनी पड़े आपको, इस पे भी आप वेस्ट नहीं करो, आप इस चीज पे भी आपको ध्यान जो है वो पूरा जाना चाहिए। कुछ तरीके हैं जिनसे वी कैन स्टॉप कंट्रोलिंग वेस्ट and we can control wastage. Okay, we are going to look at them only and then we'll try to put them into our lives also. Okay, first one is do not waste water or don't waste water. It is very important to save water because at present or as per the information available, Earth is the only planet where we have water in लिक्विड फॉर्मेट। ठीक है, लिक्विड फॉर्म जो वो लाइफ के लिए जरूरी है, ह्यूमन और एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए ऑन दी अर्थ जरूरी है, उस हिसाब से सिर्फ अर्थ पे ही वाटर अवेलेबल है। सो इफ वी वेस्ट वाटर वी माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव लॉन्ग। ठीक है, तो this might be a problem in our life, so it's very important that we stop wasting water. How can we stop wastage of water is here. The first point is turn off the tap when you brush your teeth. This can save 6 liters of water per minute. ठीक है, जब आप ब्रश कर रहे हो तो what is a habit of most people is that they turn on the tap and then they start keep brushing their teeth and then gargling and everything. If all of us, everybody of us stops doing that, मतलब when we are brushing our teeth, अगर हम tap बंद करना शुरू कर दें तो throughout the year पूरा world मिलके per minute 6 लीटर वाटर जो है वो सेव कर सकता है। per minute 6 liter water can be saved. Place a cistern displacement device in your toilet cistern to reduce the volume of water used in each flush. This is what you can do. There's a cistern in which there's a tank for water kept. ठीक है, आप उसको flush करते हो after going to the toilet. What you can do is you can put a cistern displacement device into it so that you reduce the amount of water you flush every time. ठीक है, तो वो उसके अंदर अगर रख देते हो तो कम flush जाते हैं। Take a shorter shower whenever you're going for a shower. When you're going to bath or you're going to stand under the shower, take it, reduce the time. Showers can use anything between 6 to 45 liters per minute. Showers जो है वो per minute 6 से लेके 45 liters तक का पानी जो है वो मतलब आउटकास्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 मिनट का शावर लेते हो and the maximum capacity of it to dispense water is 45 liters, means in 1 minute you're wasting 45 liters of water. Always use full loads in your washing machine and dishwasher. This cuts out necessary washes in between. Whenever you're using your washing machine or dishwasher, always use full loads. मतलब अगर उसके अंदर 10 कपड़े आ सकते हैं तो आप 10 के 10 डालो। अगर आप उसको कम करते हो तो आपको बार-बार धोना पड़ेगा and when you're washing again and again you will be wasting more water. Fix a dripping tap. If there's a leaking tap in your house, fix that as soon as possible. A dripping tap can waste 15 liters of water a day or 5,500 liters of water a year. एक dripping tap जो है वो per day 15 liters water जो है वो waste कर सकती है, dispense कर सकती है, and if that we calculate into
Here, that is around 5,500 liters of water. Okay. Water your garden with a watering can rather than a hose pipe. A hose pipe can use as much as 1,000 liters of water, and whenever you're watering your plants, use a watering can. That green color you might have seen with a shard like head in front. पौधों में पानी नहीं लेके जाओ तो उसको if you're using a hose pipe, means that pipe which has a gun attached to it, so you are basically wasting 1,000 liters. It can give out 1,000 liter water per hour kind of situation can be done there. Okay, then fill a jug with tap water and place it in your fridge. This will mean that you do not have to leave the cold tap running for water or to run cold before you fill your glass. Okay, whenever you have to drink water, what you have to do is fill a jug with tap water and place it in your fridge. Tap water से पानी का जग भरो उसको फिर इसका मतलब ये होगा कि आपको कोल्ड टैप रनिंग नहीं छोड़ना पड़ेगा या उसको मतलब फिल करके नहीं रखना पड़ेगा आपको ग्लास जब भी भरना है अपना पानी का तो आपके पास वहां पे ऑलरेडी है ऐसा नहीं है कि आपको उसको चला के 5 मिनट छोड़ना पड़ेगा तभी ठंडा पानी आएगा यू डू नॉट हैव टू डू दैट ओके Next is install a water meter when you're paying your water department for exactly how much water you use laid out an intensified bill. There is an incentive to waterless, wasteless of water. Okay, then always install a water meter in front of your house where you will have to pay for the amount of water you have used. And then if you're using less water, means if you're not wasting water, there's an incentive also which you get. That means that can reduce the amount of bill you're paying. Okay, so it's very important to install a water meter. Basically, saving water or not wasting water is very important because if there is no water, we cannot survive. अगर आपको survive करना है तो आपको पानी जो है वो save करके रखना ही पड़ेगा. So if you want to survive, you have to save water and ये छोटी-छोटी चीजें जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है? If you're taking a bottle to your school, ठीक है, and it's not complete, आपने जितना उसके अंदर पानी था वो अगर आपने पूरा नहीं किया तो just don't throw it on the road, put it into some plant. ठीक है तो वो वाटर जो है वो यहाँ पे यूज हो रहा है ब्रशिंग के टाइम में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू शुड कीप योर टैप ओपन ऑफ ठीक है इफ यू हैव वॉश्ड समथिंग सपोजिंगली यू हैव वॉश्ड समथिंग फिल्ड विद डस्ट वो एकदम साफ पानी है सब मिट्टी का पानी है उसको ले जाके पौधों में डाल दो इस तरीके से अगर आप पानी को सेव करना शुरू कर देते हो तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स जो है वो बहुत सारा जो सेविंग है वो कर सकते हैं ओके Then the next one is don't waste energy. Switch off or unplug any charger appliances you don't need on. अपन की हम लोगों की क्या आदत होती है कि हमने चार्ज में लगाया फोन चार्ज हो गया फोन और सीधा फोन निकाला and we leave the switch is on. Do not do that because that is also consuming electricity. So you need to unplug it or switch it off. Okay? Or appliances which you don't need. You're not sitting in a room, you're not there, but still the electric light is on there, the tube light or the bulb or whatever it is on there. That should not be done. Washing at a lower temperature will use less electricity. When you're using a washing machine, some washing machines have the facility to warm up the water while using it. उसको आप जितना कम टेम्परेचर पे वॉश करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी उतना ही कम यूज करेगा. यूज अ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग इंस्टेड ऑफ एन ओवन. ओवन की जगह पे एक प्रेशर कुकर यूज करें आप उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम वेस्ट होगी. इंसुलेटिंग योर होम कैन सेव यू मनी. इफ यू इंसुलेट योर होम मींस देयर इज आई थिंक नाउअडेज देयर इज अ पेंट अवेलेबल फॉर इंसुलेशन. व्हाट हैपेंस इज कि वो आपके घर को ज्यादा गर्म नहीं होने देते. जब आपका घर ज्यादा गर्म नहीं होता तो यू डू नॉट यूज मच एसीज एंड कूलर्स. वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है. थिंक अहेड व्हेन सेटिंग योर हीटिंग. आगे का सोचो जब आप अपनी हीटिंग सेट कर रहे हो या कमरे के अंदर जो हीटर यूज कर रहे हो उसकी हीटिंग सेट करने से पहले सोच लो एक बार कि आपको कितना चाहिए. if you have storage heaters, make sure you're using them efficiently. अगर storage heaters है आपके पास तो efficiently use करो, not unnecessarily use them. Check the energy level to make sure you're buying an efficient product. Energy level जो होते हैं वो 5 stars, 4 stars. Nowadays there are a lot there.
on every electrical appliances, you'll see that it's a 5-star one or a 3-star. Power saving to 5 stars, 3 stars. Use that so that you use an efficient product. Using central heating is often cheaper than heating one room with gas fire. अपने पूरे घर के अंदर हर रूम में हीटर या गैस फायर लगाने से बेटर है कि आप सेंट्रल हीटिंग अपने घर की करवा लो. If you are doing that, then that's cheaper and it also uses less electricity. Okay. Very small things you need to pay fixed times for watching TV. ऐसा नहीं पूरे दिन आपका टीवी चल रहा है, lights off रखो. अगर one light का need है तो one ही on रखो. Make your house more, filled with windows so that you can just open the curtains और आपके घर के अंदर light हो जाएगा हवा. तो ये छोटी-छोटी चीजें. If you pay attention, then you can save a lot of energy. That is not only the benefit of the planet, but also your benefit, because then you have to pay less for the electricity. Next one is don't waste paper. Okay? Buy reusable napkins and take the paper towel habit. What happens is most people are habituated of using paper tissues. Instead of that, you should buy reusable napkins जो आते हैं, handkerchiefs जो आ गए कॉटन के अंदर. Wrap gifts creatively. Gifts को पेपर से रैप करने की जगह नई नई क्रिएटिविटी जो है वो आप लगाओ. There are a lot of way in which we can save water that way. Print on both sides of paper. What happens is generally you print on one side and you keep the other side clear. You do not print on it. Don't do that. Print on both sides क्योंकि print जो है वो कभी भी reflect एक दूसरे को नहीं करेगा. ठीक है? And that will help you save paper. Reuse notebooks until the end and save empty pages. क्या हुआ कि जैसे इस साल आपने अपनी जीके की नोटबुक बनाई. जीके की नोटबुक सिर्फ half fill हुई. ठीक है? Rest is there. So what you do is you throw it. Do not throw it. Let the papers be there, the written ones. आगे जहाँ से खाली है उसको आप रफ नोटबुक की तरह यूज करो. Okay? Use a handkerchief instead of tissues. Tissues की जगह पे handkerchief रखिए. Use an erasable board for note making and reminders at home. घर पे अगर आप note making कर रहे हो या reminder के लिए अगर आप पेपर चिट्स ले रहे हो उसकी जगह पे reusable erasable board, छोटा सा white board या छोटा सा green board जो है वो टंगा दीजिए. Okay, so that you write it, when the day is over, you clean it. Okay. Say no to junk mail. Junk mail जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं यूज करना चाहिए. Junk mail means ऐसी लेटर्स और पैम्पलेट्स जिनसे आपको कोई भी मतलब नहीं है और फिर भी आप उनको ले लेते हो. तो if you stop doing these things, you can save a lot of energy, water, and paper. Saving paper basically means stopping cutting of trees. जितने कम पेपर आप यूज करेंगे उतने कम ही आपके जो ये पेड़ है वो कटेंगे. I hope all of this was clear and most of you are doing these things which have been mentioned in this chapter to control wastage, and I hope you will keep on doing it in near future also. Thank you so much.